Hello students, let's start with our next poem, that is the Ball poem by John Berryman. John Berryman is also an American poet, and here in this poem, as the name shows, the ball poem. The poem is related to a ball, and it is about a ball, and a boy is playing with a ball, and somehow while playing, his ball just goes into the water, and there was no one who could bring that ball back to him, and it was impossible to bring that ball uh, back. And at that time, what are the feelings of that boy, so we will study about that in this poem. So let's start. The ball poem. So what is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. So here the poet is just watching a boy who was playing with his ball, and he says that now when his ball has gone into the water, now what is the boy now? That means now what that boy will do who has lost his ball. What? What is he to do? Now what will he think? What will he do? How he will react? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. The poet is saying that I have. That means the poet has seen the ball while it was going down the street, bouncing. It was bouncing down the street, and then it went into the water. So merrily means happily. Now here it is told that the जो ball थी वो happily bounce कर रही थी, but here the merrily word is shown here to show the imagery only. It imagery effect, that means the poet has created a scene before us so that we can imagine how the ball goes through the street into the water body. So here first of all I would also like to discuss the literary devices, the poetic devices here. So here in the first row, that is what is the boy now, and again in the second line, what. Here these two consecutive lines are starting with the same word, that is what. So here anaphora device is used, and again in the second line we see that what and what, repetition is there. दो words बार बार same word जो है repeat हो रहा है, so here it is repetition. And again next, merrily, two lines again, consecutive lines, again starting with the same word, merrily, and here it is also anaphora. So let's come. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Now here the poet is saying that as he had seen all the things, that how the ball went into the water body while bouncing through the street, so he says that there is no use to say, oh, there are other balls. That means at that time when the boy was stuck in the grief, stuck in the pain of losing that ball, so it was of no use to console that boy by saying that there are so many balls, कि उस बच्चे को ये समझाना बिल्कुल बेकार होगा उस टाइम पे कि बहुत सारी बॉल्स हैं और हम कोई भी बॉल ले लेंगे. सो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. क्यों? क्योंकि वो जो बॉय है अपनी बॉल को खोने के कारण इतना ज़्यादा दुखी है कि ही हैज़ स्टक हिमसेल्फ इनटू दैट ग्रीफ. उसने उसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक कर लिया है. ही इज़ जस्ट फिक्स्ड विद दैट ग्रीफ. ग्रीफ मीन्स सैडनेस. वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है एट द लॉस ऑफ हिज बॉल. एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन. सो रिजिड मीन्स स्टिफ. वो एकदम स्टिल होके खड़ा है. ट्रेम्बलिंग एंड ऑल्सो ट्रैम्बलिंग विद द होपलेसनेस. उस
थोड़ी सी वो कंपन भी छूट रही है उसकी कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया है या फिर डर गया है या फिर कुछ भी ऐसी फीलिंग उसको आ रही है कि उस बॉल को खोने की वजह से ही इज़ ऑल्सो फीलिंग ट्रेम्बल, शिवरिंग फील कर रहा है। एंड ऑल्सो स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग मीन्स लुक कंटिन्यूसली एट समथिंग और दी सम ऑब्जेक्ट, और वो कंटिन्यूसली उस बॉल की तरफ जो पानी में चली गई है उसी की तरफ ही देखे जा रहा है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यू कैन इमेजिन। सो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, एंड इट सीम्स उसकी इस तरह से उसको खड़े हुए देख के ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसकी यंग डेज, दैट मीन्स ऑल हिज मेमोरीज, जो उसकी जो मेमोरीज हैं उस बॉल के साथ जुड़ी हुई, कि उसने जब पहले इतने दिनों उस बॉल के साथ खेला था, तो वो सारी की सारी मेमोरीज भी उस बॉल के साथ वो पानी में चली गई हैं। हार्बर मीन्स, हार्बर एक्चुअली इट इज़ अ प्लेस ऑन द कोस्ट ऑफ सी वेयर शिप्स आर टाइड टू प्रोटेक्ट देम, बट हियर हार्बर पानी के लिए यूज़ किया गया है, वाटर बॉडी के लिए, पानी के किनारे के लिए। सो हियर again I am repeating कि no use to say oh there are other balls, and ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. तो इस टाइम पे poet is saying कि उस बच्चे को जिसकी बॉल खो गई है, और वो जो बच्चा है अपनी बॉल को खोने के गम में डूबा हुआ है, इज़ फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, एंड देयर इज़ नो यूज़ टू टेल हिम, इस चीज़ का उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देयर वुड बी नो यूज़ टू कंसोल हिम, उसको सिंपैथाइज करने का, और ये उसको इतना कह के उसको समझाना कि बहुत सारी बॉल्स होती हैं, हम तुम्हें और बॉल ले देंगे या फिर हम और बॉल ले लेंगे। सो इट विल बी ऑफ नो यूज़, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन दैट बॉय, बिकॉज उसको वो, एंड ही वॉज स्टैंडिंग इन अ वे, बहुत ही स्टिल सा होके डिप्रेस्ड वे से कंटिन्यूसली उसी बॉल को देखे जा रहा था पानी में जो चली गई थी, और ऐसा फील हो रहा था मानो उसकी जो सारी मेमोरीज हैं उस बॉल के साथ जो जुड़ी हुई, वो सब उसी बॉल के साथ वो पानी में बह गई हो। एज यू कैन हैव अ व्यू ऑफ दिस थिंग इन योर होम ऑल्सो, कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो यू कैन सी, और कि जैसे कि एक बच्चे को कोई टॉय चाहिए, तो अगर उसका वो टॉय जो है बहुत ही उसका लविंग होता है, उसे बहुत प्यार होता है उस टॉय के साथ, बहुत उसको संभाल के रखता है, अगर उस टॉय के साथ कुछ हो जाए, वो टूट जाए, तो वो बच्चा कहेगा नहीं मुझे तो यही टॉय चाहिए, मुझे न्यू नहीं चाहिए, चाहे उसको लाख टॉयज और जाके दे दो ना, तो उसे वो फील करेगा नहीं मुझे वही टॉय चाहिए। सो इन द सेम वे this thing was happening with this boy who was playing with the ball. So next stanza is that I would not intrude on him a dime, another ball is worthless, now he senses first responsibility in a world of possessions. So here the poet is saying कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सोचते हैं कि उस बच्चे के पास जाया जाए और उसको कंसोल किया जाए, बट देन ही सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इंट्रूड मीन्स इंटरफेयर इन अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम्ड, किसी ऐसी सिचुएशन में हमें इंटरफेयर करना कि जहाँ हमारी कोई सुनेगा नहीं। एंड डाइम इज़ 10 cents, 10 cents लाइक इट इज़ करेंसी ऑफ यूएस, तो जैसे हमारे इंडिया में पैसे होते हैं, तो वहाँ पे ये 10 cents मतलब 10 पैसे की बात हो रही है। सो आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, बट मैं अब इस सिचुएशन में इंक्लूड नहीं करूँगा। नाउ व्हाट इज सेइंग कि मैं उसको उस बच्चे के पास जाके उसको कंसोल करूँ और उसको ये कहूँ कि इट्स ओनली अ डाइम, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और सिर्फ जो नई बॉल है वी कैन गेट इट बाय पेइंग ओनली 10 cents, जो कि वर्थलेस है। ऐसा कहना कुछ भी वर्थलेस होगा, सब बेकार होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द पॉइंट इज ऑफ व्यू कि अगर उस बच्चे को उसी के हाल पे छोड़ देना बेटर होगा, बिकॉज दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट ही इज़ एक्सपीरियंस some responsibility, and he has experienced loss of he has experienced loss of some materialistic thing, because this world is full of possessions, full of materialism. So इस materialism world में ये बच्चे ने पहली बार किसी चीज़ को खोया है, और उस चीज़ के खोने का जो उसको जो लॉस का जो उसे इफ़ेक्ट हो रहा है उसके ऊपर,
This is for the very first time, but due to this thing only, due to this experience only, he will sense his first responsibility. इस बॉल को खोने से जो उसको एहसास हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल बी वेरी डिप्रेस्ड एंड आफ्टरवर्ड्स ही विल रिकवर फ्रॉम इट, और फिर से अपनी पुरानी लाइफ में वो वापस आ जाएगा। फिर से वो सब इस चीज़ों को, डिप्रेशन को, उस बॉल को खोने के लॉस को वो भूल जाएगा। सो ही विल सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको उस टाइम वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खोनी होती हैं, और बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, और इंसानों को भी, इवन बहुत सारे अपने लव्ड वंस को भी हमें खोना होता है। बट वी शुड फेस दैट विद करेज, वी शुड फेस दैट टाइम, फेस दैट लॉस विद करेज। हमें अगर अपने आप को हम एक ही सिचुएशन में स्टक रखेंगे तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव, हम खुद भी उस लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। सो नेक्स्ट स्टैंजा इज देयर, पीपल विल टेक बॉल्स, balls will be lost always, little boy, and no one buys the ball back, money is external. So here the poet like first of all he just thinks that he should not go, and at that time he doesn't go to that boy when he feels that the boy should have sense of responsibility, he would experience the sense of responsibility by his own. But afterwards he just goes to the boy and he says, he makes him understand, like, people will take balls, balls will be lost always, little boy. Now he is telling him through the balls. Now here the balls means not only the balls but the other possessions of the materialistic life as well as our loved ones. कि people will take balls, कि लोग तो balls छीनते ही रहेंगे, like people हमसे बहुत सारी चीज़ें छीनते रहेंगे, या फिर हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खो देंगे, वेदर दीज आर मटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट वी आर ओइंग, और दीज कैन बी आर लव्ड वंस, जिन्हें हम प्यार करते हैं, वो इंसान भी इसमें इंक्लूड होते हैं, एंड ऑल एंड द अदर थिंग्स दैट वी आर ओइंग, जिसके हम ऑनर हैं, जो हमारी सब चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं या वॉट एवर। तो ये सब चीज़ें हम समहाउ कभी ना कभी कुछ एक चीज़ें हम इनमें से खो देते हैं या फिर हमसे छीन ली जाती हैं। सो एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी इन चीज़ों को हमें वापस ला के नहीं दे सकता, वेदर वी टॉक अबाउट द थिंग्स और वेदर वी टॉक अबाउट द लव्ड वंस। तो हियर स्पेशली लव्ड वंस आर टॉक्ड अबाउट because through the symbol of ball the poet makes us understand about the loss of our possessions or and of our loved ones. So कोई भी हमें इन चीज़ों को या इन इंसानों को वापस ला के नहीं देगा, एंड मनी इज़ एक्सटर्नल ओनली। मनी जो अगर बोला जाए तो पैसा तो एक एक्सटर्नल चीज़ है, ये तो आता जाता रहता है, इट इज़ जस्ट लाइक हम कहते हैं कि ये तो हाथ की मैल है, ये किसी का आज किसी के हाथ में है तो कल किसी के हाथ में। So here in these lines students you must know that I have marked with the red color, L word is there, L alphabet, like people will take balls will, and again L always, little, and again ball double L, and here external में L. So here the poetic device that is used here, it is we can say it is the L word. You can notice that it is not in the starting of a word, rather it is in the middle or the end of the word. So here it is a consonant sound that is used in between the words, in the middle of the words or in the end of the words, and so this poetic device is known as consonants, CONSONANCE, consonants. लाइक अगर एजोनेंस की बात की जाए तो उसमें जो हमारी कोई भी वाउल साउंड जो होती है वो प्रोमिनेंट होती है, और अगर एल साउंड या कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड हमारे स्टार्टिंग के लेटर्स में होती तो वो होती है एलिट्रेशन, लाइक इट इज़ हियर इन दी बॉयज़ एंड बॉल। तो यहाँ पे जो बॉयज़ और बॉल है, यहाँ पे जो ये कंसेक्यूटिव वर्ड्स हैं, एकदम इकट्ठे आ रहे हैं वर्ड्स,
तो इनमें जो फर्स्ट लेटर है ये है हमारा B and here it is also B. So this technique here is used as alliteration and here balls and balls repetition of the word is there. So यहाँ पे इस 3 lines में हमारे पास 3 devices हैं. First here it is alliteration and here it is consonance and here it is repetition. Okay, balls repetition, B and B in the starting of the words it is alliteration and L in the middle and end of the words it is consonance. So next, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up. So here when the poet is making the boy understand that this loss is just external, we must not fix up ourselves in that kind of situation. We must come out of this kind of situation because it is a part of our life. So here he is learning well behind his desperate eyes. Desperate means hopeless. Why he is hopeless? Because his ball will not come back. So in this hopeless situation he is learning the truth of life. He is learning that this loss is a part of our life. We will have to face it again and again throughout our life in the form of anything or in the form of any relation. So the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up. So he is learning the epistemology of loss. He is learning the nature of loss की nature क्या है. And epistemology, I wish to tell you that it is a branch of philosophy and it is related to the knowledge. That means यहाँ पे जो है epistemology of loss, यहाँ पे nature of loss की बात की जा रही है कि वो बच्चा जो है वो समझ रहा है अपनी इन hopeless eyes के पीछे, इस hopeless situation के पीछे वो loss की nature को समझ रहा है. And he is also knowing कि जो हर इंसान, जो बहुत सारे इंसान पहले से ही इस चीज़ को समझ चुके हैं. That means who are elders and adults, they are already known to this epistemology of loss. And also most know many days and how to stand up. और बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ये सीखना है. Like those who are in their young age, उनको अभी लॉस की नेचर, जिन्होंने अभी तक कोई लॉस नहीं फेस किया है, उन्हें अभी ये चीज़ सीखनी है. And like how to stand up, that means how to face this kind of situation. So here I have underlined how to stand up. How to stand up, it is repetition. And here M and M again 2 times it has been underlined. So here it is the device used here is that you are well known to, and it is alliteration. So here with this we have come to an end of our poem. So we must know that it was a symbolic poem. Through the symbol of ball we have come to know about the nature of loss. That means if we lose something, if we lose our loved ones or any of our possessions, we must overcome our feelings of depression. We must not stuck ourselves in that kind of situation only. Rather we should come out of that kind of depression or depressing feelings and start our life again as normal. So I hope you have well understood it, and I hope आपका response भी अच्छा रहेगा when I'll ask you. So with this, thank you and have a nice day.